people around us. Our elder tell us that the environment is not what it is earlier, what it was earlier. Others said that we should work on it in a healthy environment, and global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. तो समिट होती है मतलब मीटिंग होती है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है. तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द बेसिकली बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स एंड द स्पेस जहाँ पे आप लोग को रह रहे हो सारा इन्वायरमेंट है आपका. ठीक है. In this chapter, we shall be studying how various components in environment interact with each other and how we impact the environment. इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक वो जगह है, इट इज अ प्लेस जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक आके मिलकर और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं फॉर द बेटर सर्वाइवल. ठीक है. इट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्पीशीज. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एंड बायोटिक मतलब लिविंग. All the organisms such as plant, animal, microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constitutes of an environment forms an ecosystem. Constituents. Thus, an ecosystem consists of biotic component comprising living organism and an abiotic component comprising of physical factor like temperature, rainfall, wind, soil, and minerals, etc. For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grass, tree, flower, bearing like rose, jasmine, sunflower, animal like frog, insect, and birds. All these living organisms interact with each other and for their growth, reproduction, other activities are affected by the abiotic component environment. जैसे air हो गया, water हो गया, है ना ये सब. So a garden is an ecosystem, but ecosystem can be natural and artificial. ठीक है. यहाँ पे ये चीज important है कि ecosystem जो होता है, it can be natural, which is formed by nature, और artificial. ठीक है. नेचुरल क्या होता है? नेचुरल इज समथिंग जो नेचर ने बनाई, जैसे फॉरेस्ट हो गए. ठीक है. ओशन हो गया, सी हो गई. ठीक है. सारे नेचुरल इकोसिस्टम्स है. जबकि अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आपकी होते हैं क्रॉप लैंड, जो खेत बनाते हैं हम लोग. जैसे यहाँ पे गार्डन का एग्जाम्पल दिया गया है. गार्डन आप लोगों ने बनाया ना, एक्वेरियम बनाते हैं, तो दीज आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ठीक है. अच्छा, और इसमें टेरेस्ट्रियल अलग होते हैं और एक्वेटिक अलग होते हैं. टेरेस्ट्रियल समथिंग जो लैंड वाली इकोसिस्टम है. एक्वेटिक इज समथिंग जिसमें पानी इज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पोन्ड, लेक. दे आर नेचुरल इकोसिस्टम व्हाइल गार्डन एंड क्रॉप वेल्स आर ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम. ठीक है. We have seen in the earlier classes, activities are not to be read for this chapter. We have seen in the earlier classes that organism can be grouped as producer, जो कि खाना बना रहे हैं, consumer जो कि उनको पर कंज्यूम कर रहे हैं, और decomposer जो कि सड़े गले हुए चीजों को खा रहे हैं और उसको एज अ साफ करने में हेल्प कर रहे हैं नेचर को, और उसको डिग्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर substances from the environment. Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. सेल्फ सस्टेन मतलब ऐसी इकोसिस्टम जहाँ पे सब कुछ अपने आप हो रहा है, यू नीड नॉट टू इंटरफेयर. ठीक है. जैसे आप लोगों ने प्लांट रख दिया, वो खाना बना रहा है, मछली प्लांट को खा रही है, उस पर एनर्जी जा रही है, देन बैक्टीरिया वगैरह मछली को खा रहे हैं, डेड मछली को खा रहे हैं ताकि वो डिकम्पोज होते हैं ना. तो एवरीथिंग इज अकरिंग बाय ओन सेल्फ सस्टेनिंग, खुद सस्टेन कर पा रहा है. While organism can make organic compounds like sugar and starch from the inorganic substance using a radiant energy, sun photosynthesis की बात हो रही है. Sun in the presence of chlorophyll. All green plants and certain bacteria जैसे कि blue green हो गया, nostoc हो गया, which produce food by photosynthesis come under this category. And they are called producers. ठीक है. Organism depend on producer either directly or indirectly for their substance. The organism which consume the food either directly by producer or indirectly by feeding on other consumer are called consumer. Consumer can be classified variously as herbivores जो कि सिर्फ घास खाते हैं, carnivore जो कि सिर्फ flesh खाते हैं, omnivore जो कि दोनों खाते हैं, एंड पैरासाइट्स आर दोज जो कि होस्ट की बॉडी पे, किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस थ्री कैटेगरी? तो अगर हम बात करें, हर्बीवोर्स काऊ हो गई, डियर हो गए, कार्निवोर लॉयन टाइगर हो गए, ऑमनिवोर आपका बियर होता है, ह्यूमन होते हैं. पैरासाइट्स की बात करें, टिक्स होते हैं, लाइसिस होती है, टिक्स मतलब जुएं हो गई, या फिर जो डॉग की बॉडी पे इंसेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ. ठीक है. लाइसिस जुआ. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fishes and plants have died. Have you ever thought what happened when the organism died? The microorganism comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of an organism. The microorganisms are the decomposers as they break the complex organic. ठीक है. ये organic को तोड़ते हैं inorganic में, simple organic substance. They go in the soil. इसे हम leaching कहते हैं. This process is called leaching and are used up once more than a plant. तो वो क्या हो रहा है, recycle होके plant उसे दोबारा से use कर रहा है as a nutrient.
व्हाट हैपन टू द गार्बेज एंड द डेड एनिमल्स इन द प्लांट इन देयर एब्सेंस? अगर जी ये ना होते तो क्या होता, आपका एनवायरनमेंट साफ ना हो पाता और आजकल ढेर इकट्ठा हो चुका होता आपके मरे हुए जानवरों का एंड और will the nature replenishment of the soil take place even if the decomposers are not there? तो soil भी replenish नहीं हो पाती, मतलब replenish मतलब recharge ना हो पाती. दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है फूड चेन एंड फूड वेब. ठीक है, फूड चेन इज अ बेसिकली सिंपल चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है जहाँ पे आप लोग बताते हो किसने किसको खाया फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी चेन से इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनिज्म जरूर नहीं है, जैसे शेर है तो सिर्फ डियर को ही खाएगा, है ना. फूड चेन में तो क्या कहता है, डियर इज इटन बाय लॉयन, तो इसका मतलब लॉयन सिर्फ डियर को खा रहा है. बट नेचर में ऐसा नहीं देखा जा रहा. नेचर में क्या देखा जा रहा है, लॉयन कैन ईट डियर, लॉयन कैन ईट बफलोस, लॉयन कैन ईट कैंगरू, है ना, किसी को भी खा सकता है. तो देयरफॉर a single organism can occupy different trophic level, तो वो फूड वेब उसे दिखाता है. In activity we formed a series of organism feeding on one another. The series of an organism taking place various trophic level, biotic level forms a food chain. Each step or level of a food chain forms a trophic level. तो जो भी लेवल होगा उसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपका क्या बना, ऑर्गन बना. तो इन सेम वे जो आपकी ट्रॉफिक लेवल में हर एक स्टेज आएगी, सब लोग फूड चेन में जो हर एक स्टेज आएगी जो ऑर्गेनिज्म है उसे ट्रॉफिक लेवल दिया जाएगा. ठीक है, the autotrophs and the producers are the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs. Heterotrophs are those जो कि खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. The herbivores of the primary consumer come at the second, small carnivores and secondary carnivores at the third, and the large carnivore और टर्शरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. डीकम्पोजर को कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं असाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब. ठीक है, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल प्रोवाइड अस energy to the work. Thus, the interaction among various component of environment involves flow of energy from one component of system to another. As we have studied, the autotroph capture the energy present in sunlight and convert it into a chemical energy. This energy support all activity of living organisms. सारा metabolism संभाल रही है. From autotrophs, the energy goes on to heterotrophs and decomposer. However, as we saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in the form of which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it was found that important है. ठीक है, अब जो आ रहा है 10% लॉ आ रहा है बाय लिंक्समैन. द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी. तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं सोलर एनर्जी का कितना कैप्चर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% ओनली. ठीक है, that falls on the leaf and converted to food energy. When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and into the doing work, and the rest go toward the growth and reproduction. So basically maximum चीज यूज हो रही है एन एवरेज ऑफ 10%. ठीक है, अब जितना भी उसने सपोज उसने 100 जूल बनाई एनर्जी, प्लांट ने सपोज आपके प्लांट ने 100 जूल की एनर्जी बनाई, तो आपके प्लांट को कौन खाएगा, जैसे रैट ने आपके प्लांट को खाया, तो उसके पास कितना जाएगा, इसका 10%. तो सिर्फ 10 जाएगी, मतलब अगर इस पे 100 जूल एनर्जी अवेलेबल थी तो इस पे सिर्फ 10 जूल जाएगी. बेसिकली हम एक जीरो हटा देते हैं. ठीक है, and turned into its own body and made available for the next trophic level. Therefore, 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter that is present at each step and which is the next level of consumer. So, little energy is available for the next consumer. Food chain generally consists of only 3 and 4 trophic level. तो आपने देखा होगा फूड चेन छोटी होती है, 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, 5 भी नहीं, 3 या 4 होते हैं. क्यों? क्योंकि एंड तक जा सकते हैं, एनर्जी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, तो ऐसे तो एंड वाले में एनर्जी बचेगी नहीं बिल्कुल भी, ना, तो मर जाना चाहिए. The loss of energy at each step is great that very little usual energy remains after 4 trophic level. There are generally a greater number of individuals at a lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of producers. ना, तो जितना हाई जाते रहोगे उतना नंबर कम होते रहेगा, प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं. The length and the complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms. जो मैंने आपको पहले समझाया कि जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही बंदा खाएगा ना, many can eat. So instead of straight line food chain, the relation can be shown as in the form of branching, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में. Flow of energy flow diagram. Two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. ठीक है, जो आपकी एनर्जी फ्लो होती है यूनिडायरेक्शन होती है, मतलब from lower trophic level to higher trophic level ही जाएगी हमेशा. The energy that is captured by the autotroph doesn't revert back to the solar input, है ना. ऐसा नहीं कि सन से एनर्जी प्लांट ने ली, प्लांट से एनर्जी सन प्लांट से एनर्जी ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. And the energy which passes to herbivore does not come back to autotroph. As it moves progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level.
सेकेंडली द एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश, मतलब कम होती रहती है। तो एक चीज तो एक यूनिट एक्शन है और दूसरी बात एनर्जी जो होती है वो कम होती रहती है, ठीक है, ड्यू टू लॉस एट ईच लेवल। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ unknowingly some harmful chemicals enter into our body. This is called biomagnification, very important, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, मतलब जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते रहोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने। You have read in class 9 how water get polluted. One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crop for the disease and pests. These chemicals are either washed down into the soil or into the water body. From the soil, they are absorbed by plant along with water and mineral, and from the water, they are taken up by aquatic plants. This is बेसिकली हायरार्की दिखा रखी है आपको, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, ठीक है, वो आपको बना के दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड जो मैं बनाऊंगा ये फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए होगा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बनते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ एनर्जी का फ्लो दिखा रखा है। कैसा होता है ये? अपवर्ड होता है, ठीक है, जैसे सिंपल आपको वैसे 3D होता है पिरामिड, बट हम यहाँ पे 2D में दिखाते हैं। ये एक ट्राइंगल भी नहीं बना, देखो वैसे, लेट्स ट्राई अगेन, शायद बन जाए बेटर। तो सबसे नीचे कौन होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किस पे होती है? प्रोड्यूसर पे, ठीक है, दिस इज T1 ट्रॉपिक लेवल 1। इसके बाद T2 कंज्यूमर, या फिर आप ले लो हर्बीवोर्स। देन उसके बाद T3 कार्निवोर्स एंड T4 टॉप कार्निवोर। तो यहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी ऐसे जा रही है ना, हाई टू लो। तो जो बेस होता है वो बताता है कितना ज्यादा है, और जो एपेक्स होती है वो बताती है कितना कम है कोई चीज, ठीक है। So, and animal, this is one of the way in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressive at each traffic level. As human being occupy the top level in the food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body. The phenomena is known as biological magnification. ठीक है, बहुत important phenomena है। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetable and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues. They cannot away be washed by washing. इसलिए बॉइलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। What are tropic level? तो tropic level is the position occupied by different organisms and different food chain. Give an example of food chain and state the tropic level. What is the role of decomposer? They convert the complex organic material into simple inorganic. Now moving on to another important, ठीक है, इसके बाद तो आपका चैप्टर ही खत्म मेरे अकॉर्डिंग ना। ओके, so how do our environment affect the how do our activities affect the environment? We are an integral part of environment. Change in the environment affects us and our activities change the environment around us. Vice versa, हम डिस्टर्ब हो, environment डिस्टर्ब होगा, environment डिस्टर्ब होगा तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। We have already seen the chapter class 9 how our activities pollute the environment. In this chapter we shall be looking at the two of the environmental problems in detail, that is the depletion of ozone layer and the waste disposal. Ozone layer is getting depleted. Ozone क्या होता है? It is a molecule containing O3, मतलब 3 atoms of oxygen. While O2, which is we normally refer to oxygen, is essential for all aerobic form of life. Ozone is deadly poisonous. Ozone poisonous होती है, ठीक है। However, at the higher level of the atmosphere, ozone play a very essential function. It shields the surface of Earth from the UV radiation. तो हमें UV radiation से बचाता है ये, which is highly damaging to organism. For example, it can cause skin cancer, ठीक है, even slow blindness हो सकती है इसकी वजह से। Ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on the ozone molecule. तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसको UV तोड़ देती है O plus O में, nascent ऑक्सीजन में। This is called nascent oxygen, ठीक है। Then this O combines in one of it to form O3. The higher energy UV splits apart some molecule of oxygen into free oxygen called nascent oxygen. These atoms then combine with the molecule formed to form ozone. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. However, अभी ये recover भी हो रही है। This decrease has been linked to the synthetic chemical like chlorofluorocarbon. ये क्लोरीन मॉलिक्यूल निकालते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल निकालते हैं जो कि डैमेज करती है इसको, which are used in coolants, रेफ्रिजरेंट्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए।
In 1987, United Nations Environmental Program (UNEP) succeeded in forming an agent to freeze CFC production at 1986 level. ठीक है? It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC-free refrigerator throughout the world. जबकि, however, there is still few uses of CFC. Managing the garbage we produce. अब जो गंद कूड़ा निकालो उसे कैसे मैनेज करोगे? In our daily activity, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these materials? What happens after we throw them away? Let us perform an activity. You can perform this activity very easily. We have seen in the chapter life processes that the food we eat is digested by the various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break the food break down everything we eat? Enzymes are specific in nature. तो यहाँ पे enzyme की property बता दी है. Specific enzymes are needed for the breakdown of particular substance. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Because of this, many human-made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. Saprophytes कौन होते हैं जो कि dead and decay matter के ऊपर अपना dead and decay matter से अपना खाना लेते हैं. These material will be acted upon by the physical processes like heat and the pressure, but under the ambient condition, मतलब favorable condition found in our environment, these persist for a long time. Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. How many of the substances you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in the manner are said to be non-biodegradable. These substances may be inert and simply persist in the environment for a long and harmed by the various members of ecosystem. Here is a question. Why the some substance biodegradable, not some? क्योंकि कहीं पे enzyme act कर पाते हैं, कहीं पे नहीं कर पाते. Give any two ways in which a biodegradable substance would affect the environment. कर सकते हो आप. Give any two ways in which a non-biodegradable substance will affect. तो वो positively करेगी या negatively करेगी. Visit any town or city and we are sure to find heap of garbage all over the place. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrap. In the earlier classes, we have talked about the problem of dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the problem a bit more deeper. Improvement of our lifestyle has resulted in a greater amount of waste material generation. Change in the attitude will also have to be an important role. Attitude change करो अपना. With more and more things we use becoming disposable, changing in the packaging have resulted in more of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be the impact on this? ठीक है, तो ये एक्टिविटी होएगी. ये क्वेश्चंस है. ओजोन क्या है, कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे को, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, ये सब कुछ जर्नल क्वेश्चंस है. एंड समरी पे आते हैं. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. The producer make the energy from sunlight available to the rest of ecosystem. There is a loss of energy as we go from the one trophic level to next. Let's limit the number of trophic level in the food chain. ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, सीबीएसई पेपर में, कि why there is a number of limited trophic level in a food chain. Human activity have an impact of environment. The use of a chemical like CFCs have endangered the ozone layer. 5 नंबर का चैप्टर आपको बता दूंगा. ठीक है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एक्सक्लूड करने वो जो 5 नंबर बचते हैं वही चैप्टर पेज लेता है. सिंस द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट. ठीक है, द वेस्ट वी जनरेट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. द डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following group contains only biodegradable items? So leather is not leather is biodegradable sort of. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. प्लास्टिक नहीं है, फ्रूट पील होते हैं, लाइम जूस है, केक भी है, यू कैन से वुड है, ग्रास है. केक नहीं है, इधर भी केक नहीं है, तो ये करते हैं. ठीक है, ग्रास भी हो जाएगा, फ्लावर भी हो जाएगा, लेदर भी हो जाएगा. ठीक है, इधर बायोडिग्रेडेबल होता है. वैसे इस बार आप ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार. ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला भी सही है. वैसे तो केक भी बायोडिग्रेडेबल होता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म फीड कर सकते हैं. सी वाला भी बिल्कुल सही है. ओनली बायोडिग्रेडेबल ना, लेदर भी बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि एनिमल वेस्ट ही बनता है, एनिमल स्किन से बनता है. Which of the following constitute a food chain? Grass, wheat, mango, grass, food, human, grass, cow, elephant, grass, fish, goat. ग्रास. ठीक है, फुट गोट हो गया, फिर ह्यूमन हो गया. ग्रास, काउ, काउ का एलिफेंट नहीं खाता कभी भी. This one. Which of the following are environmental friendly practices? Carry cloth bag, switch off unnecessary light, walking to school with your mother. ठीक है, all of these. What happen if we kill all organism of one trophic level? अगर जब किसी एक ऑर्गेनिज्म को किल कर दोगे तो उससे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल होगा, उसकी जो आपको अमाउंट दिखेगी, क्वांटिटी दिखेगी, कम होने लग जाएगा. जब उसके नीचे वाला होगा जिसे वो खा रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल के इंक्रीज हो जाते हैं, हायर के डिक्रीज हो जाते हैं.
Will the impact of removing all the organism in one trophic level be different for the different trophic level? Yes, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है. What is biological magnification? For sure क्वेश्चन है बोर्ड का. What are the problem caused by the non-biodegradable waste that we generate? You are aware of it. If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact? It will still have some certain impact on the environment. ठीक है. Why is the damage to ozone layer cause of concern? क्योंकि ozone is a वेरी यूजफुल लेयर जो कि हम लोगों को बचा रही है यूवी रेडिएशन से. अगर ये वो आने लग गई तो हमारे पास तबाही मच जाएगी, ठीक है. हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. बट स्टेप्स आर टेकन टू लिमिट दिस. तो बहुत सारी समिट्स हुई जहाँ पे डिसाइड किया गया तो सीएफसी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है. सो हियर वी मार्क द एंड ऑफ चैप्टर आर एनवायरनमेंट. दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी. एंड अब हमारे पास दो चैप्टर रहेंगे. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. सो वी विल बी कमिंग विद दीज लेक्चर सून. कल मिलते हैं. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करना मत भूलिए. जय हिंद. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.